Hi guys, welcome back to my channel. I am Pragati and today we are back again with a very important topic and I feel like ये topic पता नहीं मुझे कितने 2 सालों से कम मेरे मन में चल रहा था and I wanted to talk about this but होता है ना कि some things don't happen when they're supposed to happen because something better is supposed to happen and I feel today जब मैं आज इस topic के बारे में बात करने जा रही हूँ I think I have much more information around it. I have much more deeper understanding around it, and I feel now is the time when I'm actually prepared to talk about this. So, drum rolls, please. Topic we are going to talk about today is situationships, hookup culture, and why you should not get into a relation or into something just for sexual pleasures. Well, I think a lot of people are not going to agree to me on what I'm going to say, but hear me out, listen, wait, just be mind free and hear me out, okay? So, as in this human world, we are always wanting to get into something for a temporary relief, for a temporary cortisol free life. Cortisol is a stress hormone, and we all are looking for things which can make us, feel better, like instantly. And that's how people in today's generation they are getting into hookups, situationships, one night stands. One night sex, friends with benefits, and at one place nothing is wrong, but on the other place you don't know what you're causing to yourself. भाई एक तो ये टेम्परेरी प्लेजर्स या टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन से तुम्हारा जो परमानेंट सीक ऑफ पर्पस है वो नहीं जाने वाला है. For example, if I want somebody, I want a partner, I want to feel good, I want sex, I want pleasure, I want all of that, and everybody wants all of that, right? I mean, it's not that सिर्फ मेरे को चाहिए, it's like that's a human need. हम सबको चाहिए, be it what age you are at, be it what gender you are, be it what size you are, we all need it. But just to find that pleasure or that feel good factor, हम अपने आप को टेम्प्रेरी रिलेशंस में डाल देते हैं, टेम्प्रेरी साइकिल्स में डाल देते हैं एंड हमें लगता है हम वाह कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बट हम ये नहीं समझ पाते कि एक प्लेजर या एक जो फील गुड फैक्टर है वो एक रिवॉर्ड की तरह बनाया गया है. ठीक है, इट्स मोर लाइक अ रिवॉर्ड. इट्स नॉट समथिंग यू आर सपोज टू डू एवरीथिंग every day to yourself with everyone you find across to fuck that reward, like pleasure is more like something you're supposed to do in some time. You're not supposed to do it every day, because once you hook yourself up to that feel good factor of pleasure, there will be a point where when you'll fall out of it. And मैंने अक्सर after being in this field of becoming an astrologer, एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि a lot of relationships fall apart because the feel good factor in the relationship doesn't exist anymore, and that's when people go and seek for external affairs, people seek for extramarital affairs, and that's how they seek for somebody else to make them feel good. And it's only and only because हम अपने प्लेजर को सिर्फ एक ही चीज़ से अलाइन कर देते हैं, वो है सेक्स, वो है इंटीमेसी, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट फील गुड फैक्टर और समथिंग टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप. इट्स नॉट जस्ट दैट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सो मेनी अदर थिंग्स which are equally important to make the relationship sustain and to make you feel good. But guys, one thing I'm wanting to tell you here is कि hookup culture या situationships या one night stands या whatever it is, it's not right, because एक तो तुम अपने बॉडी को पता नहीं कितने न्यूमरस बॉडीज से कनेक्ट कर रहे हो, दूसरा तुम अपने बॉडी को कंफ्यूज करते जा रहे हो, उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको चाहिए क्या.
तुम जितने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितने लोगों के साथ जो चीज़ें करोगे, जितने लोगों के साथ फिजिकल होगे, उतना तुम्हारी बॉडी कंफ्यूज होते जाएगी, उतना तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से यूज टू होते जाएगी। और जितना ज़्यादा वो यूज टू होगी, एक पॉइंट आएगा जब उसको कुछ और चाहिए होगा। एज सिंपल एज दैट, यू कीप ईटिंग अ पिज्जा फॉर 30 days and then you crave for dal chawal. Like that's how it is. Pizza is a feel good factor. It's something you're supposed to eat sometimes. It's not meant to eat every day. And when you eat that one pizza every day, you'll fuck your body. Everything inside you will just crumble down and probably food poisoning हो गया, hospital जाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी body, when we are so much used to like the physical stuff and physical activities and getting intimate with multiple people, हमारी बॉडी ना उस चीज़ से काफ़ी यूज्ड हो जाती है। एंड उसके बाद उसको वो डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा। जिस तरीके से वो प्लेजर फील होता है, वो प्लेजर फील ही नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ वांटिंग to always seek for somebody to make you feel better, always look for somebody to have sex with, always get into a situation of a situationship, instead of all that, try and attach yourself to making yourself feel good with the numerous 10,000 things you're supposed to do. Like for example, I love creating videos, I love talking about life, and if I'm doing this right now, it's making me feel good. And it's releasing the same dopamine which even sex would release. I mean, what I'm trying to tell you is the release of a hormone, the feel-good hormone, is something which can be released by doing so many other things to yourself. But why put yourself into a situation where you go around multiple partners, you have you open your vulnerability to those multiple partners, and in the end you are doing nothing but just running away from something you're not supposed to run away. Like a lot of people nowadays, उनको एक बार हार्ट ब्रेक हो जाने पे फिर से रिलेशनशिप में नहीं जाना, इसीलिए वो 1000 बार पता नहीं कितने लोगों के साथ सेक्स करके आएंगे। एंड देन भाई वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो भागते जा रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट वन पॉइंट देयर विल बी समबडी दे हैव टू स्टिक टू। ठीक है, आज तुम तो भाग रहे हो, कल को तुम्हारे पेरेंट्स शादी करवाएंगे, तुम कितना भागोगे? क्या तुम उस रिलेशनशिप में आने के बाद भी और लोगों के लिए भागते रहोगे? मतलब तुम तो कभी लॉयल इंसान रहे ही नहीं, तुम कभी अपने ऑथेंटिसिटी से स्टिक कर ही नहीं पाए। तो भाई जब भगवान ने हमें वो ऑथेंटिसिटी दी है, तो यूनिवर्स हैज़ ब्लेस्ड अस विद दैट ऑथेंटिसिटी, व्हाई नॉट स्टिक टू इट? व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ दैट ऑथेंटिसिटी एंड व्हाई नॉट प्रोटेक्ट इट? बिकॉज once you start fucking around, there's no going back. But once you realize the worth of the temple you have, the worth of your body, भाई ये temple है, ये body is a temple. तो एक बार जब तुम इसका worth realize कर लोगे ना, तब तुम्हें शायद समझ आएगा कि भाई what we are doing is not nice. This is something which might not be sensible enough to a lot of you, but the more we get into things, like for example, the more friends we make, the more karmic contracts we are cultivating. So अगर मैं आज आपसे दोस्ती कर रही हूँ, आपके साथ मेरा एक कर्मा कनेक्ट हो रहा है, आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, तो सोच लो किस लेवल का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। भाई तुम इमेजिन करो, तुम 10 लोगों के साथ सेक्स कर रहे हो, तुम्हारा कितने लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहा है, एंड वी हैव टू पे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये कहीं जाता नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन हुआ, ये पूरा पे करना पड़ेगा, इसका रीपेमेंट होगा, और वो किस किस तरीके से हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। तो व्हाई टू पुट योरसेल्फ इनटू समथिंग वेयर यू आर invading a new thing, invading a new karmic cycle, invading a new opportunity for you to get through that life another mile and complete this karmic cycle. हमें नहीं पता कि कौन सा कार्मिक साइकिल कितना समय लेगा उसको कंप्लीशन के लिए, किस तरीके से लेगा कंप्लीशन के लिए, वी डोंट नो दैट। अब तुम बोलोगे भाई वी डोंट केयर अबाउट कार्मिक साइकिल्स, वी डोंट केयर अबाउट बुलशिट, भाई हमें तो अच्छा फील करना है, कर लो फील। आज तुम अच्छा फील कर लोगे, अगले 10 सालों में, अगले जन्म में, आज से 10 दिन बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चीज़ से भुगतनी पड़ेगी, एंड दैट टाइम यू विल वंडर दैट व्हाई द फक एम आई बीइंग गोइंग टू ऑल दिस, why am I here, what is wrong?
So what would be wrong is you putting yourself into that another contract, getting physical with a random shitty person, and then just for that temporary feel good, you are just adding more chapters, more karmas, more work for you to complete. तो भाई क्यों करना वो चीज़? Instead, start investing in yourself, start working in yourself, start making yourself feel good, understand what you're supposed to do, understand the key factors of why you're feeling like what, and just instead of finding people to make you feel good, instead of just looking at sex as a feel good aspect, guys, stop with that. Okay, there are so many other things which you need to look at to understand that feeling good can also happen with 10,000 other different things. Not just by having sex is not the only way to feel good. Okay, so this was something मुझे बहुत टाइम से बात करना था. मुझे नहीं पता कि कितने लोग समझ पाएंगे मैं जो बोलना चाह रही हूँ, कितने लोग नहीं समझ पाएंगे. मैं इसको एक ही वर्ड में कंक्लूड करूँगी कि दैट your body, your soul, your mind, whatever you are is a temple. It's a temple which takes a lot of time to build. Worship that temple instead of disrupting it by yourself, letting other people in, disrupting it by them, through them, damaging it from within, damaging your soul, damaging your emotions. We don't need damage. We have already been giving so many things to take care of. We have already been given so many hurdles to deal with. Let's not be the person who wants to add on one more hurdle to deal with. That's all I have to say for today's video. I really hope कि शायद एक person को समझ आए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. And we begin that hashtag of trying to change. We begin that hashtag of self-empowerment. We begin that hashtag of we are enough. And all I want you all to know is that you are actually enough. You are beautiful the way you are. You don't need these fuckers to feel good. Be it guys, be it girls, you don't need anybody else to add on to your purpose, to add on to your life, just so that you can feel good for that temporary 30-40 minutes. Don't do that. It's not needed. I hope you will understand. No matter what, I still am here for you. Lots of love to you. Lots of blessings to you. And I wish that you take this advice and try to change the cycle you have put yourself in. And yeah, alright. I'll see you in the next video. Bye. ताज़ा के जीना है मुझे, बस वो होगा काफी. नहीं करने ऐसे काम मुझे कि मांगना पड़े माफी. इज्जत को फालूदा नहीं करने का, खुश रहना काफी. सर उठा के जीना है